Welcome back, guys. Now we're going to be doing practical electricity question 11 to question 15, paper 1 5054. Let's start. Question 11. Why is the fuse used in an electrical appliance? The fuse is used, it is essentially used to protect the appliance because fuse जो होती है ना, it is a thin piece of wire और एक वायर होती है जो सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट विथस्टैंड कर सकती है। अगर उस करंट से ज्यादा होगा तो जो फ्यूज होगा वो मेल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्यूज रेटिंग ऑफ 5 एम्पेयर्स। इस फ्यूज की रेटिंग 5 एम्पेयर्स है, तो उसके अंदर जो करंट होना चाहिए ना, दैट शुड बी लोअर देन 5 एम्पेयर्स। अगर ये हायर देन 5 एम्पेयर्स, वन ऑफ द फ्यूज विल मेल्ट एंड जो फ्यूज होगा इट विल disconnect all of the circuit, and since it is connected in the live wire, no more power will be going to the appliance. So that is why the answer will be B. Question 12. In the circuit shown, all the cells are identical and all the lamps are identical. Therefore, the cells are identical, मतलब EMF same होगी. Lamps are identical, therefore, the resistance will be same between each lamp. The switches are closed. In which circuit are both of the lamps the brightest? अच्छा, आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है ना? जो वोल्टेज होती है ना, इन अ series configuration, जो voltage होगी that will divide across both of the resistances, right? For example, ये 6 volts का सेल है and यहाँ 3 volts फिर यूज होगी और यहाँ 3 volts यूज होगी because these are identical resistances, ठीक है ना? While in the what do you call it, parallel configuration क्या होगा कि अगर यहाँ 6 volts है तो यहाँ भी 6 volts जाएगा और यहाँ भी 6 volts जाएगा regardless, ठीक है ना, of how much resistance there is. तो हाँ, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ फॉर अब तो ऑब्वियस हो गया है कि पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा वो ब्राइट होगा, तो इट्स आइदर सी और डी। एंड इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम ब्राइटनेस द डायोड शुड बी इन द डायोड शुड बी कनेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, ठीक है ना? सो in this direction is the conventional current, so in this direction should be the diode facing. So D will be the answer. Moving on to 13. So 13 seems like the same question. So B will be the right answer. तो आगे देख लेते हैं 14. A 100-watt lamp is switched on for 5 hours each day for 3 weeks. तो पहले हम निकाल लेते हैं total time, because we're going to be using the formula power is equals to energy divided by time. तो ये फॉर्मूला में यूज करना है। तो हम निकाल लेते हैं पहले टोटल टाइम। तो टोटल टाइम होगा 5 hours ईच डे फॉर 7 days a week फॉर 3 weeks। so that will give us an answer of 105 hours। तो हमारे पास टाइम क्या है? 105 hours। और हमारे पास पावर क्या आएगी? पावर आएगी हमारे पास 100 divided by 1000 in order to turn the power into kilowatts। तो हमारे पास 0.1 is equals to energy divided by 105। So 105 into 0.1 will be 10.5। That will be the answer for the energy. And if we multiply this 10.5 into the 0.24, we will get the answer, which is 02.52। ठीक है ना? So C will be the answer. 15. The information on the back of the electric room heater is shown. What is the suitable fuse rating for this room heater? So the fuse rating for this room heater should be slightly above the what the current is in that heater, ठीक है ना? So the slightly above option will be C। अब अभी ये भी कह सकते हो कि it could be B, but uncertainties आ सकती हैं। The fuse, the what do you call it, the current could go up or down potentially। और A, अगर ये fuse rating 4 होगी and the current is 4.2, so the fuse will melt at that point। और अगर 13 होगी, that would be way too high और इतना ज्यादा करंट पास कर रहा होगा, which will cause the room heater to what do you call it, साया हो जाएगा room heater if the that much amount of current is passing। So that is it gonna be it for this video। I hope you enjoyed। Have a great day। Allah Hafiz।